last video, we have completed the beginning introductory part. Along with that, the discussion about the calculation of GDP of the chapter Sectors of Indian Economy. So, this is Rahul Niladkar. I am again welcoming you for the online lecture of social science. Okay, so dear students, today we are going to learn about the sectors of Indian economy. The subtopic historical change in the sector. Different historical changes in the sector that we are going to see. So, dear students, please see here primary sector, secondary sector, tertiary sector. These all three sectors you all are knowing that are interdependent on each other. So, what is expected? Historical change. When we talk about developing country and developed country, so there are some variations in that. We all are knowing developing country needs more and more efforts to become the developed country. So when we see the history of the developed countries, so we come to know that in the developed countries, there was a step-by-step development. There was a step-by-step development. So when we will talk about the sectoral development in the country, so country चाहे कोई भी रहो, चाहे इंडिया रहो, चाहे अमेरिका रहो, कोई भी कंट्री क्यों ना रहो, हर एक कंट्री में ये तीनों सेक्टर्स तो रहने वाले हैं. इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. सो शुरुआत के दौर में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस दिया गया. अगर हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज की तो उन्होंने शुरुआत के दौर में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस दिया गया. मोर एंड मोर people were employed in the primary sector. At the beginning part, more and more people were employed in the primary sector. Okay, more people were employed because it was a beginning and प्राइमरी सेक्टर वाज गिविंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. अब जैसे प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद में क्या हुआ, अलग अलग इन्वेंशन होने लगे. क्योंकि जब भी कोई नीड होती है हमको तो हम कुछ नई चीज इन्वेंट करते हैं ना. ऐसा कहा जाता है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. सो इन्वेंशन होने लगे, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो एम्प्लॉयमेंट वहां था. लेकिन इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डेवलप होने लगा. न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे स्टार्टेड डेवलपिंग. ओके, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ रहा था प्राइमरी सेक्टर से तो अलग अलग मेथड से उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, नए मेथड उन्होंने डेवलप करने की शुरुआत की. तो क्या हो गया, पहले प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट उन्होंने किया. अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे या हम डेवलप्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे तो सो दे डेवलप द प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट. दे गिव द मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. आफ्टर दैट दे मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर बिकॉज़ व्हाटएवर द रॉ मटेरियल एंड द गुड्स वर प्रोड्यूसिंग इन द प्राइमरी सेक्टर, इट वाज नीडेड that are to be manufactured, something some processing and that things should be done on that, and that the reason the shift has been changed to the secondary sector. Lot of employment generation was there in primary sector. Again they started doing the employment generation in the secondary sector. Means step by step approach was adopted in the developed countries. When we talk about the economy of the developed countries or the historical development phase of the developed countries in terms of the economics. So primary sector, then they focus on the development of the secondary sector. Then naturally when the secondary sector develops, so for development of the secondary sector, tertiary sector is required because growth of the primary and the secondary sector is completely dependent, mostly dependent on the tertiary sector. Because tertiary sector, you all are knowing in the last videos we have seen the transportation services, banking services, mostly the service provider sector it is. So that all the services are required by primary sector people, means primary sector also and secondary sector also. So that's the reason this tertiary sector we can say helps for the growth of the primary and the secondary sector. So third sectoral development was there in the tertiary sector. Number of services started developing, banking related services, finance related services, and the services related to the requirement of the people as per the requirement of the people. So they develop the tertiary sector third. Means अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज की कॉन्टेक्स्ट में तो उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पहले अच्छे से डेवलप किया, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप किया, फिर टर्शियरी सेक्टर डेवलप उनके यहाँ का हुआ. मतलब हम बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया और उसी तरीके से हर एक सेक्टर को स्टेबल रखने की कोशिश जो है वहां पे की गई कि हर एक सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जीडीपी में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा, दे ट्राई टू कीप इट इन अ बैलेंस वे. तो
इस तरीके से डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुई, पहले प्राइमरी सेक्टर की हुई, फिर सेकेंडरी सेक्टर की हुई, फिर टर्शियरी सेक्टर की डेवलपमेंट वहां पे हुई, अगर हम डेवलप कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो। whereas when we talk about the India and in the context of India, in that case sometimes we can see that in India this step by step development approach was not adopted fully। अब उसके लिए बहुत सारे रीजंस भी थे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करते हैं मोस्टली क्या हो जाता है कि जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हो गया, कंट्री का इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई, तो अगर हम बात करेंगे तो कंट्री में जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी नीड ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना पड़ा। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को सर्विसेज के ऊपर फोकस करना पड़ा, तो जब गवर्नमेंट को सर्विसेज के ऊपर फोकस करना पड़ा तो इनडायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। आई बात ध्यान में। सो आपके टेक्स्ट बुक में हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर करके पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, तो उन पैराग्राफ्स में ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो पाया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से फिर पहले प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, फिर देयर वाज नीड फॉर द डिफरेंट थिंग्स, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप एंड टू सपोर्ट ऑल these two sectors it was essential to have the tertiary sector, and then there was the development in the tertiary sector. So in this way the step by step approach of the development was adopted. Okay, so this is what in the historical change in the sectors topic it is explained. Dear students, in your textbook there are various activities given, some charts are given, that charts you have to complete, some activities are given with the heading 2.1 2.2 in that sense, so you have to fill with the pencil, you have to think on that, what are the questions are given on that, you have to think on that, and you have to try to solve those charts in your textbook because that are related to the topics which we are learning. Okay, so and some questions are given below that for thinking purpose, so that questions when you have to read and you have to think on that what may be the probable answers. See dear students, your involvement in the learning is very most important. Okay, it should not happen that teachers are making the videos, you are getting the videos, but you are not contributing from your side. It has been observed that whenever any video is uploaded, so the views, number of views are very less, and I am not getting what is the reason behind that the number of views are coming less, because we teachers are making the videos for you, so it is expected you should see that, you should try to clear your concepts, you should try to ask the questions to the teachers, your doubts or difficulties. So I hope you all will be following the same, because this all learning process and online and all we all are doing it for your benefit. Okay, so I hope you will understand what I mean to say. So dear student, this is what in this topic the sectors of Indian economy, historical change in the sector. So step by step development approach is essential. इसके ऊपर सवाल भी बहुत बार आता है कि what was the development approach in the developed countries. ओके, सो ये उसका आंसर है कि उनके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट उन्होंने देने के ऊपर फोकस की गई, किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मोर एंड मोर जनरेट हुई उसके ऊपर फोकस किया गया, लेटर ऑन सेकेंडरी सेक्टर न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू दैट दिस सेक्टर डेवलप, एंड देन टू सपोर्ट ऑल दिस टू सेक्टर टर्शियरी सेक्टर दे फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इंडिया में ऐसा क्यों, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपमेंट के फेज में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से वो चेंजेस हुए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, लाइन टू लाइन आपको रीड करना है टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। These all the examples and the things are given in your textbook also. So this is what for historical change in the sector. So dear students, in the next video we will be discussing about India. What is the contribution of the primary, secondary and tertiary sector in the GDP? Calculation of the GDP, that video you must have seen. In that I have explained you how to calculate the GDP and all that things, how we are calculating the GDP and what is GDP. So dear students, what is the contribution of these three sectors in the GDP और उसमें कैसे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट कोई सेक्टर में ज्यादा है लेकिन उसका जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, तो ये सारा जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. You can ask a difficulty to your teachers to enter, and you have to underline the important points and try to find your own notes. Thank you.